Good morning, everyone. In the last lecture, we talked about the difference between contributor and worker and the qualities that is required to be a good contributor. Okay, now we are continuing this topic, that is the qualities that is required for being a good contributor. Last time हम देखा था helping nature होना चाहिए and consistency होनी चाहिए काम के अंदर, है ना? Right? Now other qualities for a contributor are that is required, that is being ethical. Ethics is what? Ethics is guided by the principle of right conduct. It became more relevant when it uses workplace in professional life. A good contributor always believe in a proverb, do what is right, not what easy. So he always want to be ethical. Especially when we talk no reference with professional ethics, it creates more value. A good contributor want to create and strongly believe also in it to develop an ethical atmosphere at workplace. This ethical behavior should be based on transparency, fairness, commitment, kindness, accountability, confidentiality, punctuality, etc., based on moral actions and obviously choosing the right step for growth. Okay, so being ethical is very much required. जैसा कि यहाँ लिखा है कि the contributor जो होता है हमेशा इस चीज को फॉलो करता है, do what is right, not what easy. हम जो है एज अ वर्कर अगर हम सोचते हैं कि हम उस बात पे जाते हैं कि जो काम हमको इजीली, मतलब हम शॉर्टकट मेथड ढूंढते हैं, राइट? बट कंट्रीब्यूटर का फोकस कहाँ पर होगा कि राइट वे क्या है, कोई काम को करने का सही तरीका क्या है. ओके, सो ही और शी हैज टू बी एथिकल. नाउ टेक इनिशिएटिव्स. For constant development, a good contributor always take initiative, which is a good sign to move the business world and lead to the constant development. There is always a great demand for the contributors in form of professionals at workplace. This could be their best contribution for the company. To achieve this initiative step, one should adopt the attitude of thinking to see your growth in organization's growth. Every success of the organization is mine as well. This thinking promotes initiation habit resulting into an ideal workplace. Okay, आपको कोई चीज का इनिशिएटिव लेना, मतलब इनिशिएट लेना भी एक मतलब एक स्टेप होता है फॉर द डेवलपमेंट, फॉर द ग्रोथ. ओके, आप अगर ये सोच के नहीं काम करोगे कि ये मेरा काम है, ये आप ये सोच के चीज कर लोगे कि ये तो कंपनी का काम है, हम क्यों सोचें, हम क्यों इनिशिएटिव लें. ओके, so this is required for the contributor to become a good contributor, that you have to be able enough to take initiative. Okay, now active work with great productivity. The difference between greed and ambition is a greedy person desires things he is not prepared to work for. An ambitious person is prepared to work every time. If we compare contributor with ambitious person, contributor is also prepared to work every time. But the thing made him differ from the earlier one is the readiness to the work with great productivity. So before contributing, he must think about the goal and the synthesis of the productivity of the task, and the goods should be involved. So actively work with great productivity is very much required. Okay. Now the last one is positive attitude. The key to success is positive attitude. So contributors should always have a positive attitude towards the situation. A contributor really believes in below mentioned Helen Keller's line about positivity. The line is, optimism is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence. It becomes more relevant in context of work life. At workplace, confidence and positive attitude is really needed for various decisions. आप आपने हर जगह ये चीज सुनी होगी कि यार बी पॉजिटिव, राइट? सो इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड एट वर्क प्लेस ऑल्सो, दैट यू हैव टू कीप द पॉजिटिव एटीट्यूड. ओके, अगर आपको डिसीजन ले रहे हो तो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है कि यस, इट विल बी फाइन. ओके, सो दीज आर सम क्वालिटीज दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द कंट्रीब्यूटर एट वर्क प्लेस. ठीक है, इसी बेस पर यू कैन हैव द ग्रोथ, और राइट. Now, transformation of expectation of student at workplace. अब स्टूडेंट का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? Albert Einstein said that there are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle. ठीक है, दो चीजों पे आप मतलब अपनी लाइफ पे बेस है.
या तो आप ये सोचो कि देर इज मतलब नथिंग, मतलब मिरेकल कोई नाम की चीज है ही नहीं, ठीक है, और आप दूसरी चीज सोचो कि एवरीथिंग इज मिरेकल। टू मेक एवरीथिंग मिरेकल वन हैज टू ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन देयर एटीट्यूड, आइडिया एंड एक्सपेक्टेशंस. When a student enters into corporate life, he expects a lot from his working life, career, and the organization. But during this expectation journey, he forget about organization expectation from him. To understand this, he has to enter into a transformation stage from his existing thoughts, the new one. For that, he has to develop deep understanding between ambitious person and a good contributor, difference between a contributor and a worker. Along with this understanding, he has to make a shift from a student to a contributor, which will be not only be helpful for workplace, but it will be helpful for society as well. ओके, जब आप एंटर करते हो, जब आप अपनी लाइफ शुरू करते हो एज ए, मतलब जब आप काम शुरू करते हो, वर्क प्लेस पर आप जाते हो, तो आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत होती है कि यार हमें हाई सैलरी मिलनी चाहिए, हमें प्रमोशंस मिलने चाहिए, राइट? बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ आप एंटर करते हो। आप अब सेल्फ सेंटर्ड होकर एंटर करते हो, आप ये भूल जाते हो कि यार जिस कंपनी, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप एंटर कर रहे हो, उनकी भी कुछ एक्सपेक्टेशन आपसे है, ठीक है? तो आपको नॉट एज ए एम्प्लॉय, नॉट एज ए वर्कर आपको उसमें एंटर करना है, यू हैव टू एंटर एज ए कॉन्ट्रीब्यूटर। जब आप एज ए कॉन्ट्रीब्यूटर एंटर करोगे, तब आपको लगेगा यार मेरी एक्सपेक्टेशन सब फुलफिल हो रही है। जैसे हमने कहा ना कि एवरीथिंग शुड बी मिरेकल। मिरेकल कब होगी? जब आप अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाओगे। किसमें ट्रांसफॉर्मेशन? आपके एटीट्यूड में, आपके सोच में, आपके एक्सपेक्टेशन में, राइट? नाउ जॉन मेके का एक स्टेटमेंट है यहाँ पर, वी बिलीव दैट बिजनेस इज अ गुड बिकॉज इट क्रिएट्स वैल्यू, इट इज एथिकल बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन वॉलंटरी एक्सचेंज, इट इज नोबल बिकॉज इट कैन रेलिवेट आवर एग्जिस्टेंस, एंड इट इज हेरोइक बिकॉज इट लिफ्ट्स पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी एंड क्रिएट्स प्रॉस्पेरिटी। ओके, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पर। Raj used to be a good student during his college days. He timely completed his tasks assigned to him. He loved to work alone and be happy to take all the credit to be the first one to complete the assignments and submitted it to the teachers. But when Raj get job, he carry on the same habit to his workplace. Whenever task has been assigned to team, he used to complete it first and always want to become first and want to achieve praises. But here in office, habit shows adverse effect. His boss didn't like this attitude to work alone and ignore team members. Boss always want him to work with his team members and want to share the credit among all team members, not alone. So boss get annoyed with him and gave him warning not to do so. So in nutshell, in college days, Raj was praised due to sincere and ambitious nature. But at workplace, he will be appreciated if he will become contributor, not ambition person. Raj has to change and get himself transformed of expectations from students to an employee at work. कितना सिंपल सा एग्जाम्पल और कितना अच्छा एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया है कि किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है। आपने यहाँ राज का एग्जाम्पल देखा कि जब वो कॉलेज लाइफ में था, उसका हमेशा ही रहता था कि अपने असाइनमेंट टास्क जो भी उसको दिए जाते थे, वो सबसे पहले करके कंप्लीट करता था और उसको तारीफ भी मिल जाती, टीचर्स भी उसको लाइक करते थे, राइट? बट यही चीज उसने वहां पे फॉलो की। जब वो जॉब करने गया तो वहां पे भी उसको जो टीम वर्क जो दिया जाता था, तब भी उसका क्या था? उसका ये था कि मुझे तारीफ मिले, ठीक है? जो चीज वो करता आ रहा था कॉलेज में, उसने वही चीज यहाँ पे फॉलो की कि मेरा ये तरीका है करने का और मुझे अभी तक हमेशा तारीफ मिली है, तो ये काम भी मेरे लिए अच्छा ही होगा। बट यहाँ पे क्या हुआ? उल्टा हुआ। जो वहां पे बॉस था, वो उससे क्या हुआ? rather than to be pleased, he was annoyed. क्यों? क्योंकि उसको टीम वर्क की रिक्वायरमेंट थी। वो ये चाहता था कि भाई सब अपना अपना एक मिलकर के ग्रुप मेंबर जो है साथ में काम। वो ये चाहता ही नहीं था कि इंडिविजुअली जो है कोई अपनी खुद का मतलब एक एम्बिशन, पर्सनल सेल्फ सेंटर्ड होकर काम करे कि मुझे मेरा काम सबसे पहले करके मुझे अपना रिजल्ट बता करके आपको तो मतलब तारीफ लेनी है, ठीक है? वो क्या चाहता था? टीम वर्क चाहता, राइट? तो ये चीज आपको बहुत सिंपल सी चीज बताई है कि जब आप कहीं चीज, एक चीज से दूसरी चीज में जब आप एंटर करते हो, तो आपको कहीं जगह पे ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ेगा। आपको एकदम स्टबन होके नहीं रहना पड़ेगा कि नहीं मैं तो शुरू से ऐसा ही करता आया हूँ तो मैं ऐसा ही करूंगा, इट इज माई नेचर एंड आई विल नॉट चेंज। यू हैव टू बी चेंज, यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योर आइडियाज, योर एम्बिशंस, जो भी आपको रिक्वायर्ड है, आपको वो कहते हैं ना समय के साथ ढलना हो, राइट? So that is all about contributor and a worker. I think we are able to understand the differences between contributor and worker. Now, students, there will be some project work for you, and there will be some exercise that you have to complete and timely submit. Okay, जैसे project work आपको दिया हुआ है to identify contributor and recognize it different from ordinary workers.
ठीक है, आपको अपने रियल लाइफ पर्सन आप मिलो, कंट्रीब्यूटर जो है, आपको उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनानी है। कोई भी आप देखते हो कि आपको, या ही और शी इज आइडियल पर्सन, आपको उसके लिए सोचना चाहिए, हमको उसकी तरह बनना है, या जो भी आपके लिए आइडियल पर्सन है, अब उस पर एक अपनी रिपोर्ट बना करके सबमिट करो। टू आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स विच लीड्स टू ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ द एक्सपेक्टेशंस ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम एम्प्लॉय एट वर्क प्लेस। ओके, थैंक यू एवरीवन।